Okay, students, today we are going to discuss the lesson 1, chemical reaction and equation. So first of all, we are going to discuss this lesson. We have seen in our daily life some examples like milk left over at room temperature in summers, an iron nail left in humid air or rainy season, grapes get fermented. Have you seen any change in it? Like if we left the milk at room temperature, अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में रख देते हैं तो क्या होता है, दूध हमारा क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉइलेज ऑफ मिल्क या फिर दूध का फट. एन आयरन नेल, अगर कोई भी आयरन की कोई नेल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है इन ह्यूमिड एयर, लाइक वी कैन से इन रेनी सीजन, इट कोरोडेड. कोरोडेड मीन्स लोहे की उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है. एंड थर्ड इज ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूरों को हम जो फर्मेंट करके हम बनाते हैं अल्कोहल. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ अवर डेली लाइफ in which we observe some changes. Observe some changes. In all above situations, substance have changed both nature and identity. इसमें उस substance का nature और पहचान दोनों ही चीज़ें चेंज हो जाती है. मीन्स अगर हम कहें एग्जाम्पल है हमारा मिल्क का, दूध को जब वो ख़राब हो गया है तो हम उसको क्या, दूध गई, हम कहते हैं दूध फट गया है. इसी तरह से आयरन नेल पे जब वो एक परत जम गई है, इट कोरोडेड, उसको हम कहते हैं कि भी इस पे जंग लग गया है. एंड ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्कोहल. मीन्स नेचर एंड आइडेंटिटी दोनों ही उनके पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं. दीज ऑल आर, ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस और वी कैन से केमिकल चेंज. इन योर प्रीवियस क्लासेस लाइक आई थिंक इन क्लास 7 देयर इज अ चैप्टर physical and chemical changes in which we teach you that physical changes are those in which only physical properties changes like shape, size, etc. But the chemical changes in which whole chemical properties are changes. Which are chemical properties? We are discussing further. First of all, there is an example when we burn magnesium ribbon, it cleaned with sandpaper. It cleaned with sandpaper fire. So as in above equation, I have given you an example, iron nail. Iron nail is a metal. Iron is a metal and magnesium is also a metal. As we keep magnesium in open air, the layer of oxide, means oxygen from the air, cover this magnesium ribbon, so it will change its chemical reaction. मीन्स chemical reaction में जो है इससे हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी उस पर ऑक्साइड की एक लेयर जो है वो प्रेजेंट है. सो टू टेक अ केमिकल रिएक्शन, मीन्स केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमें प्योर मैग्नीशियम चाहिए. प्योर मैग्नीशियम के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं विद सैंड पेपर. remove layer of oxide from magnesium ribbon. Okay. And when magnesium kept in air, it forms a magnesium oxide, MgO, 2MgO, 2Mg. Now
what are the characteristics of a chemical reactions? मीन्स हमने कहा कि chemical reaction हो रही है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि भाई हाँ chemical reaction हो रही है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज चेंज इन स्टेट. उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है. हियर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट चेंज लाइक मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज सॉलिड फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट ऑक्सीजन इज गैस. एंड व्हेन we burn this, it forms magnesium oxide, and magnesium oxide is an ash. When we burn magnesium in presence of oxygen, it makes magnesium oxide, and magnesium oxide is an ash or a powder. So we can say that there is change in the state of element. Second is change in the color. Here is an example of change in color. Like we take an CuSO4 copper sulfate solution and we react it with iron sulfate. It forms FeSO4 and Cu. ये बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. ये क्यों रिमूव करता है? इस रिएक्शन में ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आयरन इज more reactive than copper, so it displays it from here and forms FeSO4, and the color of CuSO4 is bluish and it turns into green. Hence what is here? Change in color. Third is evolution of gas. Evolution of gas means here some gases are also evolved. For example, when we react zinc with H2SO4 hydrochloric acid, it forms ZnSO4 plus hydrogen gas. And hydrogen gas, how we identify the hydrogen gas? It produces pop sound. Now, fourth is change in temperature. For example, we take a CaO, solid calcium oxide. It reacts with water. It forms calcium hydroxide plus heat. Hence, we can see that there is also a role of temperature, means change in temperature. And fifth is smell changes या फिर smell produced. Here is an example of smell produced, fermentation of grapes. Next is chemical equation. Here as you can see, we write a word equation, means we write the whole name of magnesium ribbon plus oxygen. They react with each other and form magnesium oxide. This type of reaction is called word equation. But the word equation is an long procedure. We have to write more. So to overcome this problem, we use symbols of these chemicals. Instead of writing name, मतलब उनके नाम लिखने की जगह हम क्या करते हैं, उनके सिम्बल्स का यूज़ करते हैं. एज इन क्लास 9th, आई थिंक क्लास 9 में आप लोगों ने चैप्टर 1-2 में ये थोड़ा सा इसके बारे में हिंट ले रखी है. तो फॉर मैग्नीशियम की पूरा स्पेलिंग ना लिखने के बजाय हम इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं Mg. एंड फॉर O2 ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बर्न होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए वी यूज़ O2. एंड व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. So to balance the reaction, we write 2 here and write 2 here. Mg and O2 are reacted. Now, next thing, what are contents of the chemical reaction? What are contents of
chemical equation. So what we write? There are, I think, three contents main. First of all, reactants. When two or more chemicals react with each other, these are called reactants, which are right on the left hand side. जब दो या दो से अधिक केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, एंड दीज आर ऑलवेज, और इन्हें हमेशा हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे. नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्टेंट्स रिएक्ट. जब रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट किया जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे थे, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज़ बनती है, या नया केमिकल बनता है, या नया कंपाउंड बनता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. रिएक्टेंट एट लेफ्ट हैंड साइड and product at right hand side, and the arrowhead shows the direction of reaction. This arrowhead which we see here, this shows the direction of reaction, means this reaction happens from left to right. This shows the direction of reaction. I'll give you another example. In example of, as we know that water formed by H2 plus O2, it forms water H2O. But after electrolysis, if we do the electrolysis of water, it also change into H2 and O2. Hence this reaction we can write here like this: H2 plus O2, H2O. What this sign shows? This arrow sign shows that this reaction is reversible. Reversible means left to right, right to left after electrolysis. This sign shows the reversible direction, means we can say, हम कह सकते हैं कि जो ये एरो हेड का साइन है, ये हमें क्या बताता है कि रिएक्शन जो है किस डायरेक्शन में हो रही है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. एज यू कैन सी दैट Mg प्लस O2 मीन्स जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमने देखा कि हमारे पास बना MgO. बट यू कैन सी दैट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन. जब रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं होती और उसको हम वर्ड्स में इस तरह से हमने सिंबल्स में लिख दिया है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन. व्हाई नीड टू बैलेंस a chemical reaction या equation. Now this reaction does not follow the law of conservation of mass. If you can see here, इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती. क्यों? जो कि हमें क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उतना ही प्रोडक्ट्स का जो है मास होगा इक्वल टू, उसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकता. जैसे अगर हम बात करें एक तराजू की, इसमें दोनों तरफ जो है बैलेंस होना चाहिए. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास और प्रोडक्ट्स का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए. तो law of conservation of mass says that mass remains always constant. So to obey this law, or we can say that we can't, हम इस लॉ को भूल नहीं सकते हैं, इस लॉ को हमें फॉलो करना ही है. तो टू फॉलो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन. इस केमिकल रिएक्शन को हमें
बैलेंस करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस रिएक्शन में Mg+O2, Mg के हमारे पास क्या है, एटम सिंगल है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, एंड हियर इज द MgO मॉलिक्यूल बना है हमारे पास। अब इसमें Mg यहाँ पे 1, Mg यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 1, तो इसको हमें क्या करना होगा, बैलेंस। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमने 2 लिखा तो Mg के हमारे कितने हुए 2, so we write 2 here also here. Now this reaction becomes a balanced reaction. Next thing is how to balance a chemical reaction. Chemical reaction को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि बार बार रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को नंबर ऑफ चेंज कर करके हम जो है इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सपोज वी हैव एन एग्जांपल Zn plus H2SO4. Here it forms ZnSO4 plus H2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट हेयर द एलिमेंट्स इन विच, इन एलिमेंट्स में से सबसे पहले जो है हम लिखते हैं हमेशा एक मेटल को, तो जिंक इज अ मेटल, देन सल्फर। नाउ इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी ऑलवेज राइट ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन को हमेशा हम पहले लिखते हैं। हियर द नंबर ऑफ reactants and number of products. We can say that zinc and reactant is also 1 and product is also 1. Sulfur had reactants 1 and products 1. Oxygen at reactants is 4 and products also 4. Hydrogen at reactants is 2 and in product is also 2. Hence we can say that this reaction is already balanced. This reaction is already balanced. Next example is, here we can write Fe. That's okay. This reaction I clearly from here. First of all, you can see here that Fe plus H2O, it forms Fe3O4 plus hydrogen. Now we have to balance this reaction. Here is an example, Fe plus H2O, Fe3O4 plus H2. Now here write the Fe, number of reactants, number of products. तो reactants Fe is 1, products में Fe is 3. reactants में oxygen is 1 and in product is 4. reactants में hydrogen is 2 and in product is also 2. तो first of all सबसे पहले हमें क्या करना है कि Fe यहाँ पे 3 है, तो Fe को 3 करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। Next step is oxygen. Here the oxygen is 4 and here the oxygen is 1. तो क्या करेंगे, reactants में हम oxygen को 4 से multiply. Now hydrogen becomes 8. It also becomes multiplied by 4 and this also multiplied by 4. This reaction is balanced. So I show you the steps. In first step, Fe multiplied by 3 at reactants. To complete the Fe के नंबर पूरे करने के लिए हमने क्या किया, reactants में इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप में हमने देखा ऑक्सीजन के 4 है at product, but reactant is only 1. Then we have write 4 to complete the balance the oxygen. But when we balance the oxygen, hydrogen becomes 8. Third step, to complete the balancing of H2, we write
4 here, 4 2s are 8, and we write 4 at the product with hydrogen. So next step is to make a chemical reaction more informative. मतलब कोई रिएक्शन है उसको हम देखते ही पता लगा ले कि भाई हाँ इस रिएक्शन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. वी राइट देयर फिजिकल स्टेट्स, हम उनकी फिजिकल स्टेट्स को लिखते हैं रिएक्टेंट्स के साथ भी और प्रोडक्ट के साथ भी. तो रिएक्टेंट के साथ अगर हम देखें तो हमारी स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं. लिक्विड, अगर लिक्विड है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे L, सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G, गैस है या फिर स्टीम है तो उनके लिए हम G यूज करते हैं. एंड AQ एक्वस, इट मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर, की जो भी हमने केमिकल का जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें हमने क्या किया है, वाटर को ऐड किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी यू इन दिस एग्जांपल. Fe is iron which is always found in solid state. For H2O, it is here G, means we can say that this is steam here. We form a product Fe3O4. Fe3O4 means rust, which is always in solid state. And H2 is a gas, so we write G here. तो टू मेक दिस इन्फॉर्मेटिव, इस रिएक्शन को हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ इसकी स्टेट्स भी लिख दी. लाइक हियर यू कैन सी दैट Fe solid, H2O gas means what is this? This is steam. Fe3O4 and H2 which is gas. इसके अलावा भी कुछ एक कंडीशंस होती हैं जो हम इसमें इक्वेशन के साथ लिखते हैं, इसे हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए. सच एज कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटालिस्ट also included or mentioned here. Like we have an example of carbon monoxide, CO. It reacts with H2, hydrogen gas. Carbon monoxide is solid, hydrogen is gas. It forms CH3OH. CH3OH मतलब इसने क्या बनाया, अल्कोहल. और कब बनाया, it makes it at 340 atmospheric pressure. So this shows the pressure, means pressure का भी यहाँ पे कोई एक रोल रहा है. इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ photosynthesis in which we write that CO2 carbon dioxide, H2O water, they react in presence of sunlight, chlorophyll. They form C6H12, 6 plus O2 oxygen. This reaction is not balanced now. We have to balance it, but I have to. सबसे पहले मुझे क्या बताना है कि इसमें हमारा जो है सनलाइट का एक रोल रहा है. सनलाइट मीन्स टेम्परेचर. सो वी हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन. इट इज 6CO2 plus 6H2O. Why we write 6 here? Because here we see that 6 के हमारे कितने हैं, 6 हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6 लिखा. इसके अलावा we see that oxygen is here, hydrogen is here 12. hydrogen के यहाँ पे कितने हैं, 12. To make it 12, what we write here, 6 2s are 12. Now we see that 6 2s are 12 and 6 oxygen, 12 plus 18. Here we see that 6 plus 2 6, O6 and 6 O2, 2s are 12, 12 plus 6 18. Hence the reaction is balanced. So this reaction is balanced. So it's enough for today.